Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. See, Rinku is what she is. वो ऐसे ही नहीं बोलेगी. शी इज ट्रू टू हर सेल्फ और ट्रू बात करती है. शो में दिखने के लिए ना वो इधर उधर भागेगी, ना वो फालतू में किसी की बातों में इंटरफेयर करेगी. Rinku has not been very aggressive in the show in terms of she's handled the situations and relations in a very matured manner. लेकिन यहाँ तक कि मुझे भी एक्चुअली लग रहा था कि रिंकू शायद खानजादी को नॉमिनेट करेगी. And I think Manara could not take that. Yes, she was feeling bad because it's a show where you have to nominate somebody to be on the top. Ultimately, you want to win. अगर आप दूसरों को nominate नहीं करोगे तो आप खुद कैसे जीतोगे? So that nomination is over emotions. It doesn't mean that it lowers my or it stains my connect with you. Welcoming Anita Dhawan ma'am and Janvi Vora ma'am in conversation with me on India Forums. Hello and welcome to India Forums. आप लोग कैसे हैं? और रिंकू जी का गेम आप कैसे एंजॉय कर रहे हैं हमें बताइए. We are all good and thank you for welcoming us. Yes, thank you so much for welcoming us, and we are very happy that Rinku is a part of Bigg Boss 17. It's one of our favorite shows, and we are even proud. I mean, हम show तो हर साल देखते हैं, but इस बार we are even seeing 24 hours live, Yes. जो हम कभी नहीं देखते. Yes. I mean, though 24 hours live थोड़ा boring है because you really don't get to see a lot of things. But because of Rinku हमें लगता है चलो यहाँ दिख जाएगी शायद, let's watch it. Yes. So it's fun. तो ऐसे होता है कि अभी हमारा टीवी ऑन ही है जब तक हम सोते नहीं. But we are very happy that she's there, and I think she is very organic. First 2 weeks she was at her easy pace, but that's how she is because obviously she wants to understand कौन कैसा है क्या है, and then धीरे धीरे she opens up. So I think she's doing fantastically well. Ma'am, what do you want to say about Rinku ji's game? मुझे अच्छी लग रही है. शी इज बीइंग हर रियल सेल्फ. करेक्ट. रिसेंटली हमने घर में ये देखा कि नॉमिनेशन टास्क हुआ जिसमें रिंकू जी ने एज अ कंटेस्टेंट एक कंटेस्टेंट को नॉमिनेट करना था, उन्होंने वो किया. बट हालांकि मनारा को ये बात कुछ ज्यादा ही चुभ गई और उन्होंने इसको काफी पर्सनली लिया. बट यस्टरडेज एपिसोड वी सॉ रिंकू जी गिव अ स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर टू मनारा कि मुझे 2 नाम लेने थे, मैंने तुम्हारा लिया. And we loved her for that straightforward attitude. इस बारे में मनारा रिंकू की इक्वेशन के बारे में आपको क्या? सी, रिंकू इज व्हाट शी इज. वो ऐसे ही नहीं बोलेगी. शी इज ट्रू टू हर सेल्फ और ट्रू बात करती है. शो में दिखने के लिए ना वो इधर उधर भागेगी, ना वो फालतू में किसी की बातों में इंटरफेयर करेगी. बट व्हेन इट कम्स टू हर, what she has to say, she says. Yeah. So even I think because honestly, I think Manara maybe expect कर रही थी कि रिंकू शायद खानजादी का नाम लेगी. Because जिस तरीके से episodes चल रहे थे and जो भी उनके बीच में हो रहा था off and on, I would not say कि it was very loud because Rinku has not been very aggressive in the show in terms of she's handled the situations and relations in a very matured manner. लेकिन यहाँ तक कि मुझे भी एक्चुअली लग रहा था कि रिंकू शायद खानजादी को नॉमिनेट करेगी. एंड आई थिंक मनारा कुड नॉट टेक दैट. बट रिंकू को भी शायद एक पॉइंट पे अगर उसे फील हुआ होगा कि मे बी शी कुड हैव ऑप्टेड फॉर सम अदर नॉमिनेशन, शायद इस वजह से शी इवन वेंट टू मनारा, ट्राइंग टू टेल हर दैट शी रियली मीन्स अ लॉट टू हर. हर किसी का एक अपना रिलेशन, अपनी इंपॉर्टेंस है उसके साथ जो जुड़ा हुआ है. इट्स नॉट दैट इट पुट्स यू लो या इट पुट्स खानजादी लो. खानजादी का एक अलग रिलेशन है, आपका एक अलग रिलेशन है डिपेंडिंग ऑन द पर्सनैलिटीज. बट yes, she was feeling bad because it's a show where you have to nominate somebody to be on the top. Ultimately, you want to win. अगर आप दूसरों को नॉमिनेट नहीं करोगे तो आप खुद कैसे जीतोगे? So that nomination is over emotions. It doesn't mean that it lowers my or it stains my connect with you. But I think Manara handled, she couldn't bear the nomination, and maybe for her age she's too immature. She's very kiddish, roti rehti hai, and she's really a baby. I think to be fact, if I have to say the fact, Isha is far more mature than Manara, jabki Isha I think is much younger than Manara. But आई थिंक मनारा हैंडल ही नहीं कर सकती. तो ऐसे तो आई थिंक आप हर वीक में देखोगे जो भी मनारा को नॉमिनेट करेगा तो शी विल हैव हर एग्रेसिव साइड. बट आई थिंक रिंकू ने ये कहा था कि शी नेवर एक्सपेक्टेड कि अपने ही रूममेट को नॉमिनेट करना पड़ेगा. तो शी सेड आई वेंट फॉर अ सेकंड, आई वेंट ब्लैंक. शी सेड दैट. सो मे बी उसमें उसने मनारा का नाम लिया. हाँ, लेकिन उसमें भी मनारा टुक रिंकू अदरवाइज कि व्हेन रिंकू सेड आई वेंट ब्लैंक तो उसको लग रहा था ओ यू हैड नो रीजन टू गिव फॉर खानजादी सो यू नेम्ड मी.
But what Rinku meant was कि it came as a shock to me that I have to nominate somebody from my own room. So that's where she went blank. No, but Manara is wrong here. And Not इसमें- because Rinku is my daughter, she behaved that right. way. But that reaction was not Very, required. yeah. And That was I think वो एक point तक जिग्ना जी and Rinku and all they kept her calm कि भाई ठीक है यार upset है तो बोलने दो, she's getting a frustration out. Yeah. But overdose हो गया तो वहां पर then Rinku came down कि now अब तुझे actually तेरी असलियत तो अब दिख रही है कि इतने टाइम से हम चुप बैठे हैं, तेरे से आके बात भी कर ली, बट यूर ऑन एंड ऑन एंड ऑन, यूर इन अ लूप. तो समवेयर डाउन द लाइन यू डोंट वांट टू हियर द लूप, देन ओके यू हैव योर व्यूज, देन आई एम टेकिंग माय स्टैंड कि मुझे 2 लोगों को नॉमिनेट करना है, मैं करूंगी, एंड आई एम आंसरेबल टू बिग बॉस व्हेन ही टेल्स मी गिव मी द रीजन. आई डोंट केयर अबाउट व्हाट यू थिंक, दिस इज अ गेम ऑफ नॉमिनेशन. सो आई थिंक तो रिंकू उस पॉइंट तक तब तक नहीं जाएगी जब तक कोई उसे पिन नहीं करेगा. एंड लाइक शी सेड, इफ anybody talks wrong for Jigna ji, then they have to face her, because then in relations अगर वो किसी के साथ जुड़ती है, then she'll stand for that person. Perfectly said, ma'am. जैसे कि आपने कहा कि रिंकू जी ने अभी तक कोई ऐसे एग्रेसिव होके फाइट नहीं करी है किसी से. हम कई बार देखते हैं कि किसी और कंटेस्टेंट्स के बीच में झगड़ा हो रहा होता है, घर वाले घुस जाते हैं बीच में, they try to take their fame or their screen time. But Rinku ji हमेशा खुद को दूर रखती है झगड़ों से. Correct. That's her nature in real That's life. Yeah, that's a nature. That's even उसका- at home. That's Yeah. her nature. If I have something argument with her, she says you're body. Yeah, she is like that. She's And like with everyone. and the thing is कि just because उसको स्क्रीन पे दिखना है, she'll not get No, into she will anybody's not. business. उसका ऐसे होता है यार, उनकी प्रॉब्लम है, वो sort like they're adult enough to See, sort out she's their. done so many serials, Yeah. but she never thought कि मैं public में आऊँ, मैं ये करूँ. She's not a social person. See, अगर She's not हाँ, a social person. जैसे बिग Which बॉस में today's time it is required in this line, but zero. She's zero in that. जैसे बिग बॉस में many contestants they keep saying अच्छा फुटेज के लिए कर रही है, ये कर रही है. ट्रस्ट मी, इफ रिंकू वांट्स टू डू फॉर फुटेज, इतनी साल से जो वो इंडस्ट्री में है, Yeah. वो अब तक क्या कुछ नहीं कर चुकी होती. Yeah. शी डजंट केयर. Yeah. शी विल टॉक ओनली She व्हेन says शी my work वांट्स टू talks. टॉक. My Yeah, work yeah. talks. हाँ, वो हमेशा एक ही बात बोलती है कि मुझे बोलने की जरूरत नहीं. आई एम अ प्रोफेशनल एक्टर. जब मेरा काम होता है उससे मैं शिद्दत से करती हूँ. वहां पर अगर उसका को एक्टर भी ठीक से काम नहीं करेगा तो वो उसको भी चिल्ला देगी Yeah. कि बिकॉज ऑफ यू माई वर्क इज गेटिंग अफेक्टेड. So you will see that real side of Yes, Rinku when yes. she's working. But in real life, आप एक दूसरों के बाल नोचो, आप गाली दो, आप जो मर्जी करो, जब आपका मुझसे कोई लेना देना नहीं, it's none of my business to interfere in your work. So she will not do anything for footage. She will talk only where she feels she wants to talk and she wants to take a stand for the person that she's connected with. So वरना वो किसी के लिए नहीं बोलेगी. आप लड़ लो उसके आगे, she'll just give you a deaf ear and she'll go away. Perfect. तो फैंस का ये मानना है कि उन्होंने रिंकू जी की बॉन्डिंग जिग्ना जी के साथ ही देखी है. फैंस ये चाहते हैं कि रिंकू जी दूसरे कंटेस्टेंट्स के साथ अपना बॉन्ड बनाए ताकि गेम में आगे जा सके. आपका क्या कहना है? मुझे नहीं लगता कि गेम में आगे जाने के लिए आपको बॉन्ड बनाना होता है, क्योंकि जो बॉन्ड बनता है वो तो दिल से ही बनता है. I think you have to show your real Yeah, character. and her real character is not कि because I want to move forward I have to catch somebody's finger. I will be what I am. If you think I am correct and you want me to move forward, please feel free to do so. I'll be very grateful. But अगर आपको लगता है क्योंकि मेरे दूसरे 4 लोगों से मैं interact नहीं कर रही हूँ and I am not visible, that doesn't mean I am not a good game player. कि मुझे झगड़ा करने के लिए और दिखने के लिए I have to do something, I'll not do that. I will do only what I have to do. Rest is my destiny, my work, and my attitude that is going to show on the screen. वेल रिंकू जी जैसे कई सारे ऐसे कंटेस्टेंट्स जो जिन्होंने सोलो एंट्री ली है शो में, व्हाइल यू आल्सो हैव कपल्स इन द शो, जैसे मैरिड कपल्स यानी ऐश्वर्या अमिता. Yes. तो ऐसे एलिगेशंस बीच में लगे थे कि इनका ये जो झगड़ा होता है ये काफी स्क्रिप्टेड होता है. और हाल ही में हमने एक झगड़ा देखा ऐश्वर्या और नील के बीच में, जहां बाकी घर वाले देखने आए और उन्हें से लोग बाहर निकाले तो रिंकू जी ने कहा कि दे आर अ कपल आफ्टरवर्ड्स, फर्स्ट दे आर अ Contestants. That's right. Yes. What do you want to say on that? I think she's right because maybe she thought, see, she will not interfere in husband and wife, but उसके लिए वहां पर कुछ argument हो रही है. Maybe she went to see what is the argument about. So as a contestant, अगर उसको लगता कि I should, maybe give my side of narrative कि आपको ये करना चाहिए या आपको जो भी उसको सलाह देनी है वो कर सकती है. But Ankita went on कि no, just leave them alone, husband wife है. So that's when she said, hello, the show is not about husband and wife, they are contestants. कल को अगर तो अंकिता ने बोला भी था कि मेरा और विकी के बीच में जब हुआ तो she said but maybe I was not there, या क्योंकि आप लोग की जो भी चीज हो रही थी, बट अगर एज अ कंटेस्टेंट मुझे लगेगा कि ये 2 चीज गलत है. जैसे
ईशा एंड अभिषेक के बीच में हुई, हम्म। तो रिंकू वेंट एंड सेड इवन व्हेन दे आर नॉट कपल्स बट दे वर अ कपल एट वन पॉइंट ऑफ टाइम. तो रिंकू विल वॉइस आउट हर ओपिनियन वेयर रिक्वायर्ड. शी इज नॉट गोइंग टू सी कि आप भाई हो, बहन हो, पति हो, क्या हो. इट्स गॉट नथिंग टू डू विद मी. For me, you are just a contestant and a competitor. And now Manara, how she behaved with Rinku, or how she's acting. So Manara, I'm sorry, Rinku and Jigna said कि जब यहाँ कुछ होता है ना तो पूरा झुंड आ जाता है. तो अब हमारे केस में क्यों नहीं झुंड आया? Correct. जब मुनारा ऐसे बिहेव जी. कर रही है, जो भी है, कोई भी नहीं आया. Correct. तो ये क्या है? No, so it like it is a reality show. Bigg Boss is a reality show. You have to show your real self. आपको दिखने के लिए कुछ भी नहीं करना है. हाँ. ठीक है, तो अगर मुझे लगता है कि मेरे लिए ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है बोलने के लिए, मैं दिखूं या नहीं दिखूं, मैं नहीं बोलूंगी. बट अगर मुझे बोलना है, फिर मुझे बोलने से कोई नहीं रोक सकता. सो दैट वाज रिंकू सिचुएशन. But she went with a strong mind. Yeah. कि I want to win the show, I'll come back with the Yeah, trophy. yeah. But that doesn't mean she's not enjoying her part there, or Yeah. she doesn't like Bigg Boss. She like, but फालतू का drama. But she Rinku बोलेगी. real But life में she's ऐसी that, है. She is she's that. organic. She is super organic. Yeah. मतलब we know that because she's my sister, so I know how she is. मतलब हम तो घर के इसमें भी हम किसी के इसमें इंटरफेयर नहीं करते. Yeah. It's not our nature at all. यहाँ तक कि I can give you an example कि for instance if my daughter had a little bad air with one of my relative and कुछ होगा तो या suppose उसके cousin, मेरी daughter और उसके cousin के बीच में भी कुछ होगा तो she will clearly say तुम दोनों brother sisters हो ना, आपस में कर लो. ठीक है, माँ बाप तक लेकर आने की जरूरत नहीं है. Y'all are grown And up. y'all are grown ups, y'all can fight your own battles, handle it with care, handle however you want to fight and then make it fine. Don't come to us. Yeah. So this is how we've always been brought up. We don't get into anybody's ruckus. बाकी हाँ, समझाना अलग अपनी हाँ, बात वो है. अलग बात That है is कि अलग. नाउ इफ यू आर माय फ्रेंड और मुझे लगता है कि नहीं यार व्हाट यू स्पोक इज नॉट राइट या तेरे साथ जो हुआ वो गलत हुआ, तो उसमें मे बी आई विल कम एंड एक्सप्लेन टू यू इन अ नाइसर वे. एंड इफ यू आर गोइंग टू पिन मी टू अ कॉर्नर लाइक मनारा वाज डूइंग इट टू रिंकू, तो उसमें फिर रिंकू ने बोला व्हेन शी सेड उआ उआ व्हाटएवर शी वाज डूइंग, सेड यू कीप इट टू योरसेल्फ एंड ब्ला ब्ला ब्ला. फिर तो उसको मालूम नहीं है अगर मनारा इस तरीके से रिंकू के साथ टकराएगी ना, देन शी इज ओनली सीन फर्स्ट स्टेज ऑफ रिंकू. देन रिंकू इज लाइक अ डेविल. It's better not to touch that angle of her. So we hope that Manara doesn't do that. अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा कंटेस्टेंट है जिसके साथ आप रिंकू की दोस्ती देखना चाहते हो जेन्युइनली, अपार्ट फ्रॉम जिग्ना जी? Munawar. Yeah, Munawar. Seriously, even I Munawar. I like Munawar. yeah, he's really good. And उसके अलावा if I think about the contestants, Maybe Neil. no, I think honestly speaking in the entire show, You say Abhishek. मुझे तो मुनव्वर, अभिषेक, Rinku of course because she's my sister. Manara also I like her because she's fun loving. ये इसका of course एक dirty side था कि जब उसको गुस्सा आता है तो she doesn't know what she's talking. But otherwise I think she's quite good. मतलब अच्छी है यार, she's nice. It's just that she's immature, तो उसको control ही नहीं है वो क्या बोल रही है. But otherwise I don't think any other. Vicky is okay. Ankita is super fake. Rinku की friendship. Yeah, Ankita is super fake. So I think only this Munawar and Abhishek and Jigna ji is good. Manara is also good. I would want Rinku and Manara to settle their scores and really go forward strongly. But otherwise तो मुझे नहीं लगता और किसी के साथ रिंकू के रिलेशन बनने भी वाले हैं. Well, ऐसा कौन सा कंटेस्टेंट है जो आपको लगता है अभी तक अपनी रियल साइड नहीं दिखा पा रहा है या गेम के लिए बस ढोंग किए जा रहे हैं? Whose game you don't actually like that? अनुराग बाबू भैया. I think he's super fake और मुझे ऐसा लगता है वो उस कमरे में जो लोग हैं ना वो अपने में से ही बातें करते रहते हैं. हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये दिखा देंगे, हम वो कर देंगे. They are only verbal. करके दिखाओ. जो बादल बरसते हैं वो जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, वो गरजने वाले बादल दिख रहे हैं. बरसने वाले बादल अभी उनको दिखाना बाकी है. So I think वो आपस में ही वो करते रहते हैं. YouTubers थोड़े they're very dull and boring actually. They may be very good humans. I mean as a personality जैसे अरुण जी काफी अच्छे लगते हैं. तहलका looks a little fun जब वो अपने funny element में आते हैं. तो I think पूरे Bigg Boss में अगर थोड़ा सा fun element है तो वो it's because of तहलका. उनका वो जिस तरीके से बात करते हैं, you don't understand. It's very funny. But otherwise they are actually doing nothing. I don't like Isha also. Yeah, I think Isha is फालतू में बोलती है हर बहुत किसी. एक तो she is a big liar. My God, she's a very big liar.
एंट्री में ही सलमान सर के सामने माय व्हाट अ शो दे हैड. हाँ, एंड देन अंदर जाके इट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट. सडनली जो बाहर था, समर्थ आता तो इट वाज डिफरेंट. अच्छा समर्थ के टाइम पे भी उसने झूठ बोला, देन सडनली एवरीथिंग इज डिफरेंट. आई थिंक शी इज सुपर फेक एंड शी इज अ वेरी बिग लायर. वेरी आई डोंट लाइक. मुझे ऑनेस्टली अंकिता भी बहुत फेक लगती है. शी इज वेरी फेक. यू नो, एक पवित्र रिश्ता कर दिया, या अगर आपने 4 फिल्में कर ली, इट डजंट वाली दिख रही है. या मतलब आई डोंट थिंक शी इज राइट व्हाट शी इज डूइंग. या और एक कंगना रनौत अंदर आई थी, उन्होंने भी बोला मेरी बहन है, ये मेरे जीजा है. या दैट्स रॉन्ग, दैट्स रॉन्ग, दैट्स रॉन्ग. तो वो तो आई थिंक इट्स जस्ट दैट कि साथ तो सिंपल सी चीज है. आज अगर मैं रिंकू को सपोर्ट करूंगी बिकॉज शी इज माय सिस्टर, सो सिंस अंकिता's वर्क विद कंगना जी, सो कंगना यू नो has No, but being a Kangana Ranaut, being a celebrity, you're promoting her. You should be neutral. yeah, so That was wrong. but Ankita is actually not doing anything. वो थोड़ा बहुत जो दिखती है is only when she is telling her husband, you know, उन दोनों की नोकझोंक, जिसमें of course फिर विक्की और गलत दिखता है because on a reality, if I only want to side one thing for Ankita is that Vicky is really rude to his wife. वो ऐसे दिखाता है कि you know जैसे Ankita has got no respect. वो जिस तरीके से डोमिनेटिंग है एंड द वे ही स्पीक्स टू हर, इट लुक्स वेरी बैड ऑन स्क्रीन. एंड आई थिंक इट्स वेरी इंसल्टिंग फॉर एनी विमेन. अगर कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ नॉर्मल भी ऐसे बात करे, इट्स नॉट गुड. फिर आप तो नेशनल टेलीविजन पे बात करो. और ऐश्वर्या का भी रिएक्शन वेरी वेरी बैड. या वेरी एग्रेसिव. इट लुक्स वेरी चीप, वेरी बैड. nice. It doesn't show coming from a you know even to her husband, shut up, shut up, shut up. It's very bad, very disrespectful and नहीं अच्छा लगता है. yeah, but then I think जब आप उस जोन में होते हो, तो Rinku would rather not go into that Yeah. zone. She would rather sit in so the she will corner. not connect with those people at all. Yeah. I know that for sure. Lastly, शो की host की बात में बारे बात की. I love him. Oh, I love him. I He think comes every weekend का बार to motivate. Yes, कभी yes, लाता है, yes. कभी हंसी मजाक करता है. Exactly. How do you think Rinku ma'am would share her equation with Salman Khan? Oh, she I loves him. yeah, she loves him and Even on entry, when we enter, I mean, Yeah. she entered the show. Yeah. And so he said, अच्छा रिंकू जी आप 30 साल से इस लाइन में हैं. मैंने कहा फिर आप भी तो चांस दीजिए ना, आप 30 साल हो गए हैं. हाँ क्यों नहीं इससे. तो रिंकू said, see my mummy is shivering looking at you, and even sir I love you, I don't like BB but I only watched for yeah, you. but that is a That reality. weekend cover. But that's a reality. So actually we started watching Bigg Boss. ठीक है, हमने बहुत contestants देखे, बहुत सारे seasons में देखे. Like I said, बहुत overlapping, noise pollution, chaos, abusive language. कितनी बार ऐसे होता था, why would you want to watch a show like this with sitting with your family, you know? But this show is on all credit only because of Salman sir. Yes. I mean, I love him from the time I saw him in Maine Pyar Kiya. I'm talking about like so many years back, and he's still the same. He's one of my favorite heroes. I wait for the weekend. I just love him. मतलब वो कुछ भी करे, for me he is the best. It's like that. And yeah, Big Boss हम सिर्फ इसलिए देखते हैं. I'm waiting कि रिंकू को वो कब बोले. समझाएंगे. In fact, even I'm waiting. I'm waiting for that. Yeah, I'm waiting Salman sir to, you know, take Rinku's case, fire her where she needs मतलब firing. if he thinks कि Yeah, he needs if to she's give going some wrong, advice, या correct. कुछ, I want him to give Yeah, her. so I want Salman sir to shout at Rinku if she's going wrong and appreciate her if she's doing good. Even she like it. Yeah, and I'm sure she will take it in the right Yes, spirit, and she yes. would also wait for that feedback to come from Salman Correct. sir. Because we really look up to him and we know that whatever he's going to say Yeah. to any contestant is going to be for their best interest. Exactly. So he's the best. He's everything about Like the show. last weekend he said ना, रिंकू जी आप बताइए. Oh, I loved it. हाँ, ऐसे लगा कुछ सर ने बोला रिंकू को. रिंकू को कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो. नहीं वो खानजादी का था ना इशू. हाँ, yeah. Well, that was all that I had in store for you. Great, guys. Thank great. You so Thank much. you, Your thank you, answers thank you. were Very lovely. And Thank it was very you. candid. I'm sure the audience are going to love it. Thank you so Thank much. you so Thank you much. so much, India And Forum. wish you We happy love Diwali you. to everyone. And we would like to wish happy Diwali also to the And audiences. support Rinku. And support Rinku, shower all the love. She is truly organic. Yeah. आप जो रिंकू को देख रहे हो वो वैसे ही है. उसे स्क्रीन से, फेम से, किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता. वो जो है वो वही दिखाएगी, चाहे आप उसे प्यार करो, चाहे आप उसे नफरत Of course, she loves the show. She went with a positive attitude. Yes. वो दिखाने नहीं गई. She loves the show कि मैं ये हूँ.
Yeah. मतलब कोई गलत नहीं सोचे कि एमी बिग Yeah, बॉस so में आई when we है, say हाँ. Bigg Boss is a reality show, then trust me, Rinku is real. I'm not saying this because I'm her Yeah. sister. If you want to believe it, आप post show आके भी रिंकू के साथ relation बना के देखो तो आपको actually Yeah. इसकी reality दिखेगी. Lovely. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you.